बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास वेलकम बैक अगेन टू द इंग्लिश लेसन। डियर टीचर्स, इससे पहले जितने साउंड्स हमने सीखे हैं क्लासरूम में, एक दफा आई वुड रिकमेंड यू कि आज के सेट ऑफ साउंड्स को शुरू करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप वो तमाम साउंड्स, प्लीज साउंड्स को फेस के थ्रू, रिकग्निशन के थ्रू आप उनसे रिकॉल करवा लें। जैसे आ, ब, ख, ड, साउंड के थ्रू इनको रिकॉल करवा लीजिए ताकि हम अगले जब बढ़े आज के आवाज के लिए तो पिछली तमाम साउंड्स इनको रिकॉल हो चुकी हों। हर लेसन को शुरू करने से पहले आपने पिछली साउंड्स को एक दफा रिकॉल जरूर करना है। तो आज का सफा किताब का बच्चों देखिए, आज फिर एक नई पिक्चर स्टोरी के साथ में आपकी क्लास में आ गई हूं। आपने सुननी है स्टोरी मेरे से एक बार और फिर टीचर क्लास वाली आपको सुनाएंगी बार बार, लेकिन आपने मेरे साथ जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए बिल्कुल रेडी हो जाए और बुक को कर दें साइड पे। तो टीचर्स, आज के लेसन में हम पिक्चर्स के बारे में बात करेंगे, सराउंडिंग में साउंड्स के बारे में बात करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्टोरी में कौन सी ऐसी साउंड है जो बार 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 आ रही है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पे देखिए एक एक्टिविटी हो रही है, जरा गौर से ऑब्जर्व करके बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है। एक डोर है जिसके आगे कुछ लोग खड़े हैं, तो क्या वो लोग एक दूसरे को अंदर जाने के लिए धक्का दे रहे हैं या अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल जैसे टीचर आपसे कहती है ना, ओके स्टैंड अप, लाइन अप, इट इज होम टाइम, घर जाने का वक्त होता है, तो आप क्या करते हैं? बस उठते हैं और दौड़ लगाते हैं और धक्का दे देते हैं लोगों को? नहीं, टीचर आपको सिखाती है मेक अ लाइन। यस, सो व्हेन यू मेक अ लाइन, इस लाइन बनाने की एक्टिविटी को इंग्लिश में कहते हैं क्यू। मेक अ क्यू, मेक अ क्यू, स्टैंड इन अ क्यू। तो क्यू का मतलब आप लाइन में खड़े हो और अपनी बारी का इंतजार करें। सो दिस स्टैंडिंग इन द लाइन एक्टिविटी इज कॉल्ड क्यू, मेकिंग अ क्यू। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। कैन यू सी हाउ इज इट रोलिंग इट्स आईज? आप भी अपनी आईज रोल करें, शाबाश प्ले ग्रुप। यस, क्वेश्चन मार्क हम तब लिखते हैं अपने पेज के ऊपर या लिखा हुआ देखते हैं जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्या आपको भूख लगी है। तो जब हम ये लिखने में पूछते हैं तो ये हम निशान डालते हैं, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ क्विल्ट। जब हमें सर्दी लगती है, हम सो रहे होते हैं, तो हम अपने ऊपर एक मोटी सी चादर ले लेते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम हो तो मोटी सी रजाई ले लेते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं क्विल्ट। क्विल्ट। तो शुरू की आवाज क्या हुई? क्यू, क्वेश्चन मार्क, क्विल्ट। तो आवाज है क्वा, क्वा। सो टीचर्स, अभी आपने जो स्टोरी बच्चों से सुनानी है, इसमें आज कुछ क्वा की साउंड के वर्ड्स हैं, तो देखते हैं कि बच्चों को वो वर्ड स्टोरी में सुनाई दिए या नहीं। आज का जो साउंड है बच्चों, जरा एक दफा मेरे साथ फिर रिपीट कीजिए। इट इज क्वा, क्वा। Feel it here and then feel it here on your lips. Qua. Good. So the story goes, let's look at the story now. The library hall was huge. So many people were sitting there. It was very silent. Everyone was quiet and reading their books and newspaper. Qasim was also standing in a queue to get inside the library. He was a science student and wanted a book for making robots. Luckily, after some searching, he was able to find a book about making do-it-yourself robots. He took the book, got it issued, and rushed home to his grandfather. Qasim's grandfather was a scientist, so Qasim wanted help from his grandfather. His grandfather was in his bedroom, laying on the bed with his favorite quilt on. He had a fever when Qasim entered the room. He asked so many questions from his grandfather about robots. His grandfather gave him a toolbox and some old electronic devices. His grandfather explained him and gave him advice. My dear grandson Qasim, always remember, never quit. Life will be hard and mean to you. Promise me that you will never give up and always keep trying.
Qasim felt proud of his grandfather's advice and he opened the toolbox to make a robot of his own. Now teachers, what you're going to do now, you're going to pause this video here. If you have arranged some objects on your table, or if you have the flashcards, or even if you want to utilize the picture story, you can do that. So I'm going to wait here, and meanwhile you read out the story loud again. Do not forget कि आपने अपने बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से और प्रॉपर इंटोनेशन के साथ बच्चों को ये स्टोरी सुनानी है, बिकॉज यू हैव टू इंगेज देम। और ये आज की आपकी मेन एक्टिविटी है कि आपसे जब ये सुनेंगे तो फिर इन आवाज़ों को खूब अच्छे तरीके से इस पिक्चर में आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो। All right, dear students, if you were observing the picture on your book, let's see how many qua words can you see in this picture. Can you see Qasim? Because his name is also starting with the qua sound. There's a quilt on the bed. Good. And his grandfather looks sick and he's holding a book which says robot. Now teachers, abhi aapne bachon se jo discussion ki, we'll build upon that further. So the words which were in this story and in the presentation here, they're also the part of the vocabulary. Quilt, queue, standing in a line is making a queue, and question mark. Kindly please correct the spellings. Question mark. And what is question mark? It is a symbol when we ask somebody a question in writing that what are you doing, how are you, आप कैसे हैं, आप कब आए। तो जब हम इनको लिखते हैं जुमलों में तो आगे ये क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। So teachers, please pause this video and use this time for the library corner activity. Either you want to use the flashcards or if you want to give them cutouts of the pictures which you have drawn with the chart paper or anything, वो आपने involve करना है। बच्चों से कहना है कि जरा उसको डिस्कस करें and focus on the starting sound of these words which is qua. So please pause the video. So after the library corner activity, teachers, we are now going to quickly wrap it up because अभी आपने बच्चों को ये स्टोरी सुनानी है और बार बार सुनानी है, और जितनी दफ़ा ये स्टोरी में इस साउंड को सुनेंगे उतनी दफ़ा अपना हैंड रेस करेंगे, so that you know while reading it out loud they are focusing on the initial starting sound of it. So teachers, अभी आप बच्चों को जब प्ले ग्राउंड में लेके जाएंगी तो आज का जो इनका जो फोनिक है, जो आज का साउंड है qua, उसको आपने यूटिलाइज करना है एज अ रिसोर्स. दे कैन गो आउटसाइड इन अ क्यू. सो qua queue. Good. So teachers, kindly you can also change and alter your instructions. There is a worksheet available in the description box. Make sure the children are working on it. If you want to color it, fine. Otherwise, you can also do some sort of vegetable printing or cotton ball printing, whatever source you think can be recommended as home activity. मकसद ये है कि बच्चे एक्टिविटी करते हुए उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करें जो उन्होंने इस लेसन में सीखी थी, और उस साउंड को जब ये रिपीट करके बोलेंगे दोबारा तो हमारा लिसनिंग स्पीकिंग का टास्क भी अचीव होगा, which we started in the start of the lesson, that today they are going to talk about pictures related to the sound in the story. Continue with the lessons. Take care. Allah Hafiz.